welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Why did Ajay Devgan call Salman Khan before announcing the release date of Runway 34? Raj Kundra hides from the paparazzi while Shilpa Shetty cheerfully poses at the airport. Anushka Sharma and daughter Vamika turn cheerleaders for Virat Kohli. Runway 34, it's a wrap! It's a wrap! अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले अजय देवगन ने सलमान खान को क्यों कॉल किया? आखिर क्यों सलमान से बात करना अजय के लिए इतना इम्पोर्टेंट था? बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे अक्सर हर साल उसी डेट या हॉलिडे पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। सलमान खान ईद के दिन अपनी फिल्म्स रिलीज करते हैं तो आमिर ने क्रिसमस को अपने लिए रिजर्व किया है। अजय देवगन यूजुअली ऑप्ट्स फॉर एन इंडिपेंडेंस डे और दिवाली रिलीज, लेकिन अगले साल वो अपनी अपकमिंग फिल्म रनवे 34 ईद के मौके पे रिलीज करेंगे। पैंडेमिक और मल्टीपल लॉकडाउन्स के चलते कई फिल्में डिले हो चुकी है। डेट्स और स्पेशल हॉलिडेज के लिए काफी स्ट्रगल चल रहा है एंड द बिग सुपरस्टार्स आर मेकिंग श्योर कि कोई किसी और की फिल्म को इम्पैक्ट ना करे। ईद, दिवाली, क्रिसमस एंड इंडिपेंडेंस डे के दौरान बॉलीवुड की सबसे बिग बजट फिल्म्स रिलीज हो रही है, लेकिन अगले साल ईद पे सलमान खान ही नहीं बल्कि अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 भी रिलीज होने जा रही है। Yes, it's true. And we have all the inside scoop on how that happened. वैसे तो ईद सलमान के लिए रिजर्व्ड है, but with so many delays, films releasing one after the other next year, अजय को रनवे 34 के लिए अच्छी रिलीज डेट नहीं मिल रही थी। That's when he picked up the phone and called सलमान, जो कई सालों से उनके दोस्त है। सलमान और अजय पब्लिकली अपनी दोस्ती का इजहार करते हुए नहीं नजर आते हैं, लेकिन द टू हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। वो हमेशा एक दूसरे से पूछकर ही अपनी फिल्मों की रिलीज डेट्स प्लान करते हैं, सो दैट नीदर ऑफ देयर मूवीज गेट अफेक्टेड। इस बार जब अजय ने रियलाइज किया कि ईद के दौरान कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सलमान को कॉल किया टू चेक द स्टेटस ऑफ टाइगर 3 एंड इफ द मूवी विल बी रेडी फॉर रिलीज बाय ईद नेक्स्ट ईयर। जब सलमान ने बताया कि टाइगर 3 अगले साल क्रिसमस में रिलीज होगी, अजय आस्क्ड हिम इफ ही कैन रिलीज हिज फिल्म रनवे 34 ड्यूरिंग द ईद वीकेंड। सलमान से अप्रूवल लेने के बाद ही अजय ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की। अजय के लिए सलमान की दोस्ती किसी भी फिल्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलमान के एक और दोस्त साजिद नाडियाडवाला अगले साल ईद पे ही अपनी फिल्म हीरोपंती 2 रिलीज कर रहे हैं। Whether he will change the date again to avoid a clash with अजय या फिर वो लेंगे अजय के साथ बॉक्स ऑफिस पे पंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रनवे 34 को ओरिजिनली मे डे टाइटल किया गया था एंड द फिल्म स्टार्स अजय, रकुलप्रीत सिंह एंड अमिताभ बच्चन। Reportedly, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है एंड विल सी अजय एंड रकुल प्लेइंग पायलट्स ऑफ एन ill-fated फ्लाइट। Here's hoping कि रनवे 34 बॉक्स ऑफिस पे स्मूथ लैंडिंग करे और किसी की हीरोपंती उनके आड़े ना आए। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा लौट आई हैं अपने क्रिसमस ब्रेक से।
शिल्पा ने अपने बच्चों के साथ पेपराज़ी के लिए पोस्ट किया, लेकिन उनके पति राज कुंद्रा मीडिया को अवॉइड करते हुए सीधे गाड़ी में जाके बैठ गए। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपने हस्बैंड राज और दोनों बच्चों के साथ मसूरी में हॉलिडे कर रही थी, जहां से वो दे रही थी अपने फैंस को रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम हर ट्रिप। Now the actor and the reality show host has been through a rough time this year. उनके पति राज कुंद्रा पे ऑब्सीन वीडियोस के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का इल्जाम था and he spent 2 months in jail before being released on bail. उनकी कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है, लेकिन it looks like the family is making an effort to move past the trauma they faced. Take a look. कई बी टाउन सेलेब्स दिसंबर में छुट्टियां मनाने इंडिया से बाहर जाते हैं या फिर इंडिया में किसी एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे अपना क्रिसमस और न्यू ईयर ब्रेक मनाते हैं। शिल्पा और उनके परिवार ने कुछ दोस्तों के साथ मसूरी में छुट्टियां मनाई एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन द सीनिक ब्यूटी ऑफ मसूरी। लेकिन इट लुक्स लाइक शिल्पा 31 दिसंबर का जश्न मुंबई में सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ मुंबई लौट आई है। कितने पास हो यार। Shilpa has shared snippets of her journey from a helicopter ride that she and her family took from Mussoorie to the nearest airport और मुंबई लौटकर शिल्पा और उनके बच्चों ने पेपराज़ी के लिए पोज किया। पेपराज़ी ने शिल्पा के बेटे को प्यार से बाबा बुलाया, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक ऑफ हिज मास्क। बाबा वो नहीं उतारेगा, वो बहुत। शिल्पा also posed alone with her daughter शमीशा, जो पैप्स को देख के काफी क्यूरियस थी। While Shilpa was all smiles with her daughter, उनकी बेटी ने दिया पैप्स को एक बड़ा ही क्यूट सा एक्सप्रेशन, जिसे देख के सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। शिल्पा के पति राज कुंद्रा, who also flew back with his family, avoided the paparazzi. Shilpa didn't post any pictures with Raj during their holiday as well, and it looks like he's staying away from any unnecessary attention. Raj is still being investigated for his involvement with the production and distribution of obscene content, लेकिन उन्होंने recently एक statement में अपने आप को बेकसूर कहा। Well, here's hoping कि 2022 आपके लिए और खुशहाल रहे और कोई नई मुसीबत आपके दरवाजे तक ना पहुंचे। हाँ सर, ठीक है। अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका बनी विराट कोहली की चीयरलीडर्स। अनुष्का अपनी बेटी के साथ साउथ अफ्रीका गई है, जहां वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अनुष्का हैज बीन ऑन एन एक्सटेंडेड सबैटिकल फ्रॉम एक्टिंग। 2018 में जीरो के बाद शी हैज नॉट साइंड एनी फिल्म एज एन एक्टर एंड रिसेंटली सुनने में आया था दैट शी हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द झूलन गोस्वामी बायोपिक एज वेल। अनुष्का फिलहाल अपने प्रोडक्शन हाउस पे फोकस कर रही है। उन्होंने पिछले साल एक हाईली अक्लेम्ड वेब सीरीज और फिल्म प्रोड्यूस की थी और इस साल भी वो अपने नए प्रोडक्शन वेंचर्स के साथ बिजी है। She has also been traveling around the world with her cricketer husband विराट कोहली और लंदन में कई महीने बिताने के बाद अब अनुष्का, विराट और बेटी वामिका साउथ अफ्रीका में एक साथ है। अनुष्का and Vamika were spotted cheering for Virat from the stands. अनुष्का ने एक all black outfit पहना था with her signature hoop earrings. While Anushka has been away from the big screen as an actor for a long time now, वो बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। She was part of the sports drama Sultan, where she played a wrestler. लेकिन सलमान खान has revealed that originally Mrunal Thakur was being considered to play the lead. सलमान ने बिग बॉस पे आए शाहिद और मृणाल को ये बात रिवील की।
Salman said that Mrunal was ultimately not cast क्योंकि उस वक्त ये पहलवान टाइप नहीं लगती थी। हर फिल्म अपनी कास्टिंग किस्मत में लिखवा के लाता है। अनुष्का सुल्तान की मेन लीड बन गई and we hope that she will make her comeback on the big screen soon. अनुष्का जी यहाँ पर परिणीति चोपड़ा का करियर शुरू हुआ धमाके के साथ and she won a lot of praise and critical acclaim for her acting skills. लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आया एक मुश्किल दौर जहां उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई and in spite of going through a makeover, वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी. But that changed in 2021 with back-to-back films and great performances in Saina, Sandeep or Pinky Farrar and The Girl on the Train. Pariniti spoke to Rudrani Chaturaj and shared what the past decade in B-Town has taught her. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to a very special edition of Speak Easy. This is a year-ender special and our guest today has been having a great year and today she's here to tell us all about it. I'm talking about the very talented and vibrant Pariniti Chopra. Hello! Thank you. Hello. Thank you so much. It feels awesome. Like when people introduce me like this, it feels like I've done something special because I've been waiting for this for a long time. I wanted this sort of appreciation and this to be prefixed to my name. So I'm happy. I'm very happy and very, very grateful. You know, from the time that you started to a time here, and especially during this time, does it feel surreal, Pari, that you are here where you are? Yeah, it does. It does feel surreal because I spent too many hours sitting in my bedroom wishing for this day. I spent too much time analyzing my mistakes and fixing it. There are two things. One is your intention that you want to fix things. And then the second thing is whether you manage to do it or not. It's like you're sitting at home and you're imagining a bikini body, but you never go to the gym. Sometimes you can go to the gym and not get that bikini body. So it depends on what happens for you in your life. And I'm happy that I could, get the right films, pick up the right roles and actually fix it and come to where I am, where, yes, I'm in the best performances of the year. I've finished a decade in the industry. I'm doing some of the best films that I could have only dreamed of. So I'm really, really happy about where I am. I just want to keep my head down and I just want to stay in the game and I want to do my best. So the moment I was waiting for this, I was waiting for my films to do really well. I was waiting for my performances to get appreciated and I was waiting to do the best films. Once I have it, I can't relax. This is what I was waiting for. I have to hit the road running and I have to do it. So literally right now, I'm in my makeup van on the set of Unchai. Like I have to be on set in 20 minutes. So for me, that itself tells me so much about where I am right now. I want to speak to you about my journey and I want to do it. And I'm doing it from this set. That really proves where I am today. And I'm very happy about it. You've completed a decade this year. It obviously means a lot because your journey is nothing that I would call normal. I'm sure you wouldn't want it to be that way as well. No. So I want to know, today when you look back at where you started, what has changed about Pariniti Chopra after 10 years and why? I think now I'm aware that I'm not alone in this industry, in the sense that I'm not doing films just for me or my happiness. I'm doing them also to meet the expectations of my audience. I'm aware that they have expectations of me. They demand a certain standard of performance from their favorite actors. And I'm glad that I'm in that list. I'm glad that when I don't perform, I get told off for it. I'm glad that the critics tell me she can do better. That means they have those expectations. So now what has changed is that I have a very active relationship with my audience, which I didn't have before. And that has come from all the learning, that has come from all the failures. And I'm so happy that I had those failures in my life because I don't think anybody could just give me this lesson. I needed to learn this lesson,
And I'm so glad that I made certain mistakes in my career early on so that I could quickly learn and quickly fix. So I want to know, what was those mistakes and what have you actually learned from each one of them? It's just, I think that there was a phase in my career that I think I started hearing a lot of things and I started following them blindly. I think that I started following maybe the template of other actresses, you know, and I sort of lost my individuality and I lost what I was known for or what the people expected out of me. I think that that's natural as a human being. You can go through that phase. I'm actually glad it happened quickly and, you know, I could get out of it quickly. But I think that impacts your decisions, that impacts the films that you're doing, the people you're working with, everything. So ultimately, when those films come out and people start questioning your choices, that's when you realize where you went wrong. So I'm glad that I got that lesson. You know, mistakes are very important. If I hadn't made a mistake, like I said, I would have never learned a lesson. We're talking about 10 years, so let me take you back to the moment where it all started. And I want to know that you, of course, were on the other side. You were in marketing, you know, you were doing other things. And it started from there where you got spotted and you were asked to audition. But do you remember it? And today when you look back, would you have done things differently? No. I think everything that happened, everything good and bad in my life has been amazing. Because I wouldn't be the person that I am. I wouldn't be the actor that I am. Nothing. The person that is sitting in front of you today wouldn't exist if all that hadn't happened exactly the way it happened. Mm-hmm. So when I entered Yash Raj, at that time it was just to get work experience to go back to London. But it led to me getting launched by that company. So why would I ever change anything about it? And even the failures that I had in my career, I wouldn't have gotten the sort of films that I'm doing today if it hadn't been for that. So no, I absolutely remember the very first day I was offered. I remember Manish Sharma had told me that, you know, Adi wants to meet you. And I went to Adi and Adi gave me a 3-film deal with him. I will never forget that day. Like, it was the best day of my life because I felt like the wheels were turning and I felt like my life was changing, and it did. You know, with the phase that you're going on, the kind of skill that you're taking, that Priyanka has also said something to the fact that how you've changed. Because I'm sure she's a huge part of this 10 years. She said, "I'm proud of you, baby. This is what I was waiting, and I'm so glad you're finally doing it." And I was like, no, I mean, I don't want to make light of it. She is the best big sister, and she said the most amazing things. And she's always been in my corner. And like when I did well, she was so supportive. So I'm very happy. We must wrap with giving people a peek of what you're doing. I'm in a makeup van right now. I'm going to walk out of this van and go to the sets of Unchai, Suraj Barjatia's film. I'm going to shoot that now. And next year, I'm going to shoot Animal. And then there are 2 other films which I'm going to announce soon. Thank you so much, Parji. Thank you so much. It's always lovely chatting with you. I just want to wish everybody a very happy, safe, healthy, and a prosperous new year. Please live life. Focus on living your best moments, your best days, and don't worry about anything else or anybody else. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Romance, झगड़े या फिर fashion pop-up. There is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the stories making headlines today. उर्फी जावेद ने एक ऑनगोइंग सोशल मीडिया ट्रेंड पर बेस्ड एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड किया है. इन द वीडियो द वॉइस ओवर हैज अ मैन टॉकिंग अबाउट हाउ ही हैज इनफ मनी टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ फॉर अ डे. लेकिन उससे परसों की चिंता है कि उस दिन क्या होगा. इस हिलेरियस वॉइस ओवर पे उर्फी जावेद ने कॉमिकल एक्सप्रेशंस बनाते हुए एक वीडियो अपलोड किया है दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर यूजुअल कंटेंट. Rubina Dilaik has shut down a troll who used what seems to be an old photograph of hers and shared a then and now comparison of the actor. Rubina Dilaik का ये before and after transformation share करते हुए netizen ने लिखा, "The struggle is real." लेकिन Rubina Dilaik ने इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है. Rubina Dilaik ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया and added a caption that said, "I want to meet the genius who edited the left picture and ask how badly beaten up was he/she with life."
लुक्स लाइक अगली बार रुबीना दिलायक से पंगा लेने से पहले लोग 10 बार जरूर सोचेंगे। डेली सोप अनुपमा में आने वाला है ढेर सारा ड्रामा। अनुज कपाड़िया की बहन मालविका अब शाह परिवार में रहने लगी है एंड शी प्लान्स अ क्रिसमस पार्टी जहां सभी को वो इन्वॉल्व करती है। वहीं वनराज और अनुपमा दिल खोल के बात करते हैं एंड शेयर देयर कंसर्न्स एंड फीलिंग्स विद ईच अदर। मालविका बा और बापूजी को भी इन्वॉल्व करती है और क्रिसमस की तैयारियों की वजह से घर में चहल पहल देखकर वनराज खुश हो जाता है। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच क्या अनुपमा अनुज कपाड़िया को अपने दिल की बात बता पाएगी? एक्टर दिलीप जोशी अपने कैरेक्टर जेठालाल के लिए मशहूर है। He has been a part of तारक मेहता का उल्टा चश्मा for many years now। लेकिन उन्हें एक ही किरदार लंबे समय तक पोर्ट्रे करने में कोई आपत्ति नहीं। He feels कि शो अच्छा चल रहा है, राइटर्स अच्छे ट्रैक्स लिख रहे हैं, तो इसे छोड़कर किसी दूसरे शो पे चांस लेना सेंसिबल ऑप्शन नहीं होगा। The actor said in an interview, "My show is a comedy show and it's fun being a part of it. So till the time I enjoy it, I will do it. The day I feel that I'm not enjoying it anymore, I will move on. I do get offers from other shows, but I feel that when this show is doing well, why unnecessarily quit this one for something else? This is a beautiful journey and I'm happy with it. People love us so much and why would I want to ruin that for no reason?" देवलीना भट्टाचार्य और अभिजीत बिचुकाले के बीच हुई है साफ बात। अभिजीत बिचुकाले has been making many controversial remarks about देवलीना भट्टाचार्य जो उन्हें uncomfortable कर देता है। देवलीना भट्टाचार्य के बार कहने पर भी अभिजीत बिचुकाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। In a recent episode, देवलीना भट्टाचार्य ने अभिजीत बिचुकाले को साफ बता दिया that he makes her uncomfortable when he passes comments about her। क्या अभिजीत बिचुकाले अपना बिहेवियर सुधारेंगे? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.